Good morning, everyone. Very warm welcome to Baby Code Free PTE sessions. Today is our session number 5, and I'm going to teach you about retell a lecture for the speaking module. अभी हम अपना speaking module cover कर रहे हैं. So today's topic is about retell a lecture. In the last 4 sessions, we have already covered speaking topics. तो आप उनको जाके देखिए so that you will be on track with me. और रिटेलर लेक्चर क्या होता है? नाउ इट्स अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जहां पे आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों को इवैल्यूएट किया जाता है एंड इट रिक्वायर्स यू टू अंडरस्टैंड. आपको क्या करना है? समझना है एक लेक्चर को और उसको रीटेल करना है. रीटेल मीन्स आपको दोबारा से उस लेक्चर को सुनाना है, बताना है हमें, राइट? नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस इज आफ्टर लिसनिंग और वॉचिंग अ लेक्चर. आप एक लेक्चर को सुनने या देखने के बाद क्या करते हो? उसको रीटेल करते हो अपने वर्ड्स में. सो इसकी लेंथ कितनी होती है? अप टू 90 वर्ड्स. ठीक है. आपकी स्किल्स यहाँ कौन कौन सी इवेलुएट हो रही है? लिसनिंग और स्पीकिंग की. और आपको टाइम जो मिलता है आंसर करने के लिए वो होता है 40 सेकेंड्स का. नाउ व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर रीटेल अ लेक्चर? स्ट्रैटेजी नंबर 1 इज राइट योर नोट्स इन एन ऑर्डर एंड एन इफेक्टिव वे. जब आप लेक्चर को सुन रहे हो तो नोट्स आप प्रिपेयर करोगे, उसको ऑर्डर और एक इफेक्टिव वे में लिखोगे. कंटेंट वर्ड्स को देखो कि आपको की इंफॉर्मेशन क्या सुनाई दे रही है. डू नॉट वरी अबाउट द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स बट मेक श्योर कि आपको उसका मीनिंग समझ आया हो. यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स टू प्रिपेयर फॉर बिफोर द माइक्रोफोन ओपन. आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड्स का टाइम होता है माइक्रोफोन के ओपन होने से पहले. सो क्विकली आपको रिव्यू करना है अपने आइडियाज को. नोट्स में क्या करना है? जॉट डाउन करना है. ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश व्हेन यू स्पीक. डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम नेटिव लैंग्वेज टू द इंग्लिश. आपको ट्रांसलेट नहीं करना. यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली. नाउ बी रेडी. जैसे ही रिकॉर्डिंग बिगिन होगी, लुक एट द इमेज टू हेल्प यू एंटिसिपेट द टॉपिक ऑफ द लेक्चर. आप इमेज को देख के क्या कर सकते हो? एक आइडिया लगा सकते हो कि आपका टॉपिक क्या है लेक्चर का. नोट्स बनाओ किस पे? अपने नोटबोर्ड बुकलेट पे जो आपको मिलती है. रिमेंबर यू कैन चेंज द वॉल्यूम यूजिंग स्लाइडर. स्लाइडर को देख के वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हो. डू नॉट नाउ व्हेन यू आर टेकिंग अ नोट्स, जब आप सुन रहे हो और नोट्स बना रहे हो, एज यू लिसन टेक नोट्स ऑफ द मेन एंड सपोर्टिंग डिटेल्स. उनका लो. डोंट ट्राई टू राइट डाउन एवरीथिंग. सब कुछ आप नहीं लिख सकते. कीवर्ड्स, एब्रिविएशन, सिंबल्स, एरोस, इनके थ्रू अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करो. ऑर्गेनाइज करो अपने आंसर को. जब रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी आपको 10 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा. टोनर इन टोन बिफोर दैट टोन इंडिकेट की माइक्रोफोन ओपन होने वाला है. ब्लू बार अपीयर होगा आपका रिकॉर्डिंग बॉक्स में एंड रिकॉर्डिंग स्टेटस आपको शो करेगा. तो आप इससे क्या कर सकते हो? प्लान कर सकते हो कि हाउ यू विल बिगिन एंड देन यू विल प्रेजेंट योर इंफॉर्मेशन. उसके बाद आपको क्या करना है? समराइज करना है. यूज योर नोट्स टू समराइज all the main points and add as many supporting details as you can, as well as implications and conclusion. क्लियरली बोलो at a natural pace. 40 seconds का टाइम है आपके पास रिटेल करने के लिए इंफॉर्मेशन को. सो डू नॉट नीड टू रश नहीं करना आपको. ओके. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू आंसर दिस? कैसे आप आंसर करने वाले हो? अब आपको पता है कि आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है प्रिपेयर करने के लिए. रिकॉर्डिंग बॉक्स ओपन होने वाला है. इमीडिएटली यू हैव टू स्पीक. सो हमेशा जब भी ऑडियो इज प्लेइंग यू कैन टेक नोट्स ऑन द नोट बोर्ड प्रोवाइडेड. ध्यान रखो कि ये जो नोटबोर्ड है इस पे आप एब्रिविएशंस का, शॉर्ट वर्ड्स, की फॉर्म्स का यूज करोगे. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज मेक गुड यूज ऑफ इमेज टू प्रिडिक्ट द टॉपिक ऑफ द लेक्चर. अब इमेज को देख के आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपके लेक्चर का टॉपिक क्या है? यू हैव 3 seconds बिफोर यू लिसन टू द रिकॉर्डिंग. आपके पास 3 सेकेंड का टाइम होता है जब रिकॉर्डिंग आप सुनने वाले हो. सो क्विकली इमेज को देखो. टाइम टू थिंक अबाउट द वोकैबुलरी ऑल्सो. इससे आपको एक आइडिया भी मिल जाता है टॉपिक का. आप प्रिडिक्ट कर पाते हो और उसके बाद क्या होती है? आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है. मेक गुड यूज ऑफ 40 सेकेंड्स ऑफ स्पीकिंग टाइम. आपके पास सिर्फ 40 सेकेंड्स का टाइम है बोलने के लिए कि आप सारी चीजें उसमें इंक्लूड करो अपने लेक्चर की. अगर आपने इफ यू रिपीट आइडियाज, करेक्ट योरसेल्फ और हेजिटेट, you will use up valuable time and lose the score points. So keep talking and ignore any mistakes you make.
You know that your question is scored on the basis of content, oral fluency and punctuation, कि कैसे आपकी स्कोरिंग होती है. Partial credit score apply होता है. No credit is given for no response or any irrelevant response होगा तो आपको कोई स्कोर उसका नहीं मिलेगा. Right? Now tips to increase. Before listening आप scan करो image को. If one is included, quickly do that. Listening, सुनते हुए recording को attention to the content of lecture, notes लो. नोट्स को रिव्यू करो जब रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए. 10 सेकेंड्स का टाइम है. स्पीक व्हेन यू हियर द टोन, और जब बोल रहे हो स्पीक क्लियरली, नेचुरली. रीटेल करो लेक्चर को अपने नोट्स को देखते हुए एज अ गाइड, एंड डू नॉट गो बैक टू करेक्ट योरसेल्फ और हेजिटेट, वो आपको नहीं करना. राइट नाउ लेट्स लिसन दिस. अब देखो आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है. दिस इज अ ह्यूमन मेमोरी आर्किटेक्चर आपको दिया है. मेमोरीज के बारे में, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट. फॉरगेटिंग, अटेंशन, एनकोडिंग. तो आपने देखा कि क्या क्या चीजें. नाउ आई एम गोइंग टू प्ले द लेक्चर फॉर यू एंड देन यू हैव टू समराइज योर रिस्पॉन्स. आपको रिटेल करके बताना है. ओके Now, let's look at the human memory architecture. We store some information temporarily in our short-term memory. The short-term memory holds information for less than a minute, then gradually it disappears. If we want to retain the information, we need to make an effort to learn it. Short-term memory space is limited in size. It holds only about 7 items. Now, let's look at long-term memory. This memory is very powerful. It stores information for months, even for years, and it can store large quantities of information. Our long-term memory helps us to remember events and things that happened in the past. It helps us to remember language and how to use and understand words. And it also helps us to remember physical skills, how to swim, and ride a bicycle. In conclusion, if you read or hear anything for the first time, it goes into short-term memory, and after reproduction of that information, it is turned into a long-term memory. now you have 10 seconds of a time to think about all this and take your notes. Now when you are listening this, you have to write your notes. So what he was telling is, he was telling about this human memory architecture है ना. And he stated about short term memory, long term memory. कि short term memory क्या होती है? It is limited in size and it is temporary also, and it can store up to like 7 items. And another thing the lecturer told about long term memory is that it helps you to remember the language and the skills also. And in the end, also, it concluded about that if you have any new information, it goes into short term memory. And the efforts of reproduction becomes the long term memory also. So please, whenever you are listening, write down all those so that by the next 40 seconds, you can retell about it. Now read it. Now see, so whenever you start speaking about retell a lecture, always start with the lecture was about, right? The lecturer stated that. The lecturer also said that. The speaker concluded by saying that, because audio में recording में he concluded है ना. Speaker ने conclude कहा था. So you should also see the bold words. In bold words का आप use कर सकते हो अपनी retell a lecture की speaking में. Okay, let's see one more question. Now see, this lecture is about diabetes. It is mentioned here, use up to insulin. So this means that they are actually talking about diabetes in the lecture. So let me start playing it. Listen to this lecture. There are many lifestyle diseases in the modern world. One of the most concerning is diabetes. It is possible to control diabetes with drugs, but there is no cure. There are things, however, that people, especially young people, can do to avoid it. If they are overweight, they should try to lose weight. They should also watch what they eat and try to avoid foods high in fats and sugars. People should exercise regularly by jogging, swimming, or doing aerobics. In addition, they should walk or cycle more instead of traveling by car or bus. If people change to this healthier lifestyle, we may be able to stop the rise in diabetes in the future.
Hmm. Now, see what he's describing is he's talking about the measures to stop or to stop spreading the diabetes. Now, what are the measures is that they can start working on reducing their weight. They should start having the drugs, but drugs cannot be cured. So you can see that they are talking about exercising also, that how you can do the exercises, swimming, jogging, walking also. And they also mention about to switch to the healthy food, like the healthy food choices, exercising more, and then they can spread the modern, like they can stop the spread of the modern lifestyle of the diseases. So all these notes, you can write it down and then you can plan out your answer. Now we did hear the sample answer. The lecture was about the measures of stop spreading diabetes. The speaker also mentioned about that diabetes can be controlled using drugs but cannot be cured. Young people should avoid food high in fats and sugars and they reduce their weight if they are overweight. They should also practice regular exercise like swimming, jogging, walking instead of using their cars. He also concluded that if people switch to their healthy food choices and exercise more, then people may be able to stop the spread of this modern lifestyle disease, right? So always plan your answer according to the 40 seconds. I hope this was an informative session. आपको retailer lecture की practice पता चली कि आपको कैसे करनी है, what tips and strategies you can apply. So just unlock your secret to PTE success. Don't miss out this golden opportunity जो आपको मिल रही है, free PTE sessions, right? So always watch our live sessions on the Baby Code application and even on the YouTube. Stay tuned for our tips and strategies and the sample answers which I am providing to you so that you can boost your overall score. Okay, stay tuned, and I'm going to cover up something new in the next session. And thank you so much. Bye bye. Take care.